Hello everyone, welcome to Unique Digital Academy. As far as my commitment is concerned, I told you that I will give you each day a single class that may be of fundamentals, idioms or phrases, or you can say phraseology part like phrasal verb or synonym antonym or question discussion or any grammar fundamental class. So today I will discuss here some important questions for your forthcoming RI, ARI, AMIN, ICDS or SI exam also, because there is no difference between, I mean to say, English पिला कौन सी competitive exam रे केवल difference तमें बाहर करीबा कथा है descriptive और passage और grammar और phraseology आउ किसी difference न था ये चारटा जाक जदि पढ़ी कि हमें जिबा पिला जेकोनोसी पिला मते कहउछन सारे एसआई क्वेश्चन डिस्कशन कर अरे एसआई रे किछ स्पेशल क्वेश्चन अलग नै सही नाउन रो एसआई रे क्वेश्चन आसीबो सही नाउन रो आरआई रे क्वेश्चन आसीबो सही नाउन रो ओएस रे भी क्वेश्चन आसीबो ओपीएससी रे यूपीएससी आईएस रे भी सेम नाउन रो पिला क्वेश्चन आसी तनो हमको नाउन पढिबार अछि हमको एसआई वाला नाउन पढियार नै तमे कहियो पिला सर सब इंस्पेक्टर जो नाउन आसे सही गोटा पढाऊ आरआई रे जो नाउन आसीबो सेटा पछरे पढाइबे हाउ कैन दैट बी पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स सब इंस्पेक्टर जो नाउन रो रूल जहा नाउन रो रूल यूनिवर्सल सेटा एसआई रे जहा आसीबो पिला आरआई रे भी सेम रूल यू हैव टू फॉलो सो डिफरेंस किछ नहीं आरआई इंग्लिश अमीनो इंग्लिश एआरआई इंग्लिश सब इंस्पेक्टर इंग्लिश किछि नहीं हमको ए टू जेड सब जगह ग्रामर पढिबा को पडिबो ए टू जेड सब फ्रेजियोलॉजी सेक्शन वोकैबुलरी सेक्शन कवर करिबा को पडिबो ताहले हमें पिला जो परीक्षा देबा फॉलो करिबा इवन इंक्लूडिंग बैंकिंग आ एठी कोनोसी गोटे निर्दिष्ट एग्जाम पई सेमति किछि इंग्लिश न थाए पिला लास्ट टाइम पिला लास्ट ईयर एसआई देखिबो किछि वोकैबुलरी पके दिसला एक्स्ट्रा तनो हम ताको डेली बेसिस रे पढी का जेबा ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू today I told you that I will discuss some important questions for your forthcoming it may be SI exam or it may be RI exam. So first question is in front of you. If you take my advice, you would not have been in problem. I have told you many a time, and again here I am writing here conditional clause. Pila conditional clause मु तीनटा रूल कहूची फर्स्ट हला टाइप 1 इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 सब्जेक्ट प्लस will किंबा shall प्लस v1 सेकंड टाइप पिला if plus subject plus v2 subject plus would plus v1 plus dash and third type if plus subject plus had plus v3 subject plus would have प्लस v3 प्लस डैश पिला देखा ये तीनटा पॉइंट मन रखिया पड़िबो एटे टिके लक्ष्य करो पिला v1 थिले सेपटे will किबा shall किबा एपटे will किबा shall थिले एपटे v1 लागिबो जदि v2 थाए then it will would जदि had v3 थाए it will be would have v3 पिला माने समस्त लक्ष्य कर एठी would have v3 दैछि ता माने टाइप 3 रो पिला would have v3 ता माने एपट कोन आसीबो ना had v3 तेरो कोन हो पिला had टेकन इजीली बुझे किरि कर पिला एटा had टेकन होबो टू को होबनी कारण would be तले एटा टू के थांदा आ will be थिले इति टेक के थांदा बुझी परलो पिला आउ गोटे रूल अच्छी that is fourth one if type 0 actually v1 subject
plus V1, it is in case of truth. एटा ट्रुथ फिला किछि मोडाल लागिबो नाही पिला तीनटा एग्जांपल दोछि टिके देखो इफ यू कम आई विल गो इफ यू कैन आई वुड गो इफ यू had come आई वुड हैव गॉन पिला जानि परलो इफ यू कम आई विल गो इफ यू कैन आई वुड गो if you had come I would have gone एठी पिला हबो कोन ना if we hit iron it melts देखो पिला इट इज ए ट्रुथ साइंटिफिक ट्रुथ तेनु पिला देखो पूर्ण थरे कहि दउची will shall थिले v1 किबा v1 थिले will shall V2 थिले would had V3 थिले would have V3 तेन ये तीनटा रो देखिया को पड़िबो को पट पिला ब्लैंक्स अछि एठी would have V3 देइछि तेन एठी had V3 so had taken will be the answer okay fine तापर पिला we will move to second question टिके लक्ष्य करो पिला आई ऑलवेज थिंक हिम ए क्रिमिनल पिला माने मु तुमको एई यूनिक डिजिटल एकेडमी रे तम मानको पिला सेंटेंस फर्स्ट क्लास गुडा जो कहिथिली करिथिली गतकाली भी कहिथिली जो कहिथिली पिला देखो सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ए पार्ट ता तुमको कहिथिली पिला तादरे तुमको बुझेइथली वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट एडवर्ब एंड एडजेक्ट जदी देखि न पिला एबे भी देखि दबो ए यूनिक डिजिटल एकेडमी रो YouTube सेशन रो फर्स्ट क्लास गुडा जो करिछि पूरा विविडली सेंटेंस ऊपर एनालाइज करिछि पिला मु आई एम डैम श्योर तुम माने देखिला क्लियर बुझी पारिबो टिके लक्ष्य करो पिला आई ऑलवेज थिंक हिम ए क्रिमिनल टिके सुनो पिला सब बेले ऑब्जेक्ट काहा को कहंती पिला ना ऑब्जेक्ट होउची जे व्हाट को किंबा whom को आंसर करे जदी if a sentence is the verb is action word जदी verb टी पिला action word हेतिबो ताहेले तापर ता सहित जोटा व्हाट को किंबा whom को आंसर करूची देखो पिला हिम माने whom ए क्रिमिनल माने व्हाट तो लक्ष्य करो पिला जे व्हाट को आंसर करे दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भलो भाबे पिला लक्ष्य करिवो जे whom को आंसर करे दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते पिला एक्यूजेटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते डेटिव पिला देखो दिस वन इज डेटिव बट दिस वन इज नॉट एक्यूजेटिव कारण साधारणतः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गोटे जिनिस को ही बुझाई थाए आई गेव हिम देखो पिला आई गेव हिम ए पेन एटा गोटे जिनिस को बुझाउची पिला सो इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट को आंसर करूची तेनु मन रखि थबो पिला जदि व्हाट को आंसर करू थिबो किंतु गोटे जिनिस हेई नथिबो दैट इज कॉल्ड फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट इज अदरवाइज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एटा को कहिबा पिला फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट कारण व्हाट को बुझाउची किंतु गोटे जिनिस को बुझाउ व्हाट को आंसर करूची बट गोटे जिनिस को बुझाउ सो दिस इज कॉल्ड फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट आ फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट सेकंड वे रे देखिया पिला एई ऑब्जेक्ट विषय रे एटा एनालाइज करूची सो फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट इज अदरवाइज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जोटा ऑब्जेक्ट विषय रे कहूची
ଯେମିତି ପିଲା ଦେଖିବ I call him a fool। ପିଲା ସହଜରେ ଦେଖ କାହାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କଣ ଆମେ କହୁଛେ କଣ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ କଣ କୁ ବୁଝଉଛି ପିଲା କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କୁ ବୁଝଉନି ସो ଇଟ ଇଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟିଟିଭ ଅବଜେକ୍ଟ। अच्छा तादरे पुणी कौन रहउची कारण देखिए पिला फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट को आमे नै करी मूळे रे वॉइस चेंज करि परिबानी किंतु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आमे मूळे रे नै ए पेन वाज गिवन करि परिबा ए फूल वाज कॉल्ड इज कॉल्ड हे परिबनी तेनु सेही व्हाट को बुझौथिबो बट जिनिस होई न तब दैट इज कॉल्ड फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट। देखो पिला एटा होची ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विषय रे कहिला ए फूल ए फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट हे परिबो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तेणु पिला मु भाबुची पूरा क्लियर है गलो ये जो क्रिमिनल टा कैन बी ए फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा सो फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट एटा डेटिव पिला भूल रे फैक्टिव लिखा है देखो पिला नेक्स्ट वन भारी बढ़िया क्वेश्चन अच्छी पिला देखो आई वाज गिवन ए बुक पिला देखो इटी होची वाज माने बी वर्ब टिके भलो कि देखियो पिला बी वर्ब माने इज आम आर वाज वेयर बी वर्ब फॉर्म आ पर जदि वर्ब रो आईएनजी फॉर्म लागिबो पिला एटा एक्टिव अछि आ मूल रे सब्जेक्ट अछि जदि बी वर्ब पर पिला वर्ब रो थर्ड फॉर्म लागिबो ताले पिला एटा पैसिव अछि मूल रे ऑब्जेक्ट अछि टिके भलो कि लक्ष्य करो परा इज आमार वाज वेयर परे जदि वर्ब रो आईएनजी फॉर्म लागिला तब सेंटेंस इज इन एक्टिव ही इज प्लेइंग देखियो पिला ही इज प्लेइंग इज पर आईएनजी अछि सो इट इज एक्टिव ही वाज पनिश्ड पिला देखो वाज परे V3 अछि सो इट इज पैसिव वाज परे V3 थिले पैसिव बी वर्ब परे। अच्छा पिला जदि आईएनजी लागि छि त माने एटा होछि सब्जेक्ट किए ही माने से जदि वाज बी वर्ब परे V3 लागि छि त माने एटा होछि ऑब्जेक्ट इति ही माने से नो ताकू काहा मु कहली ना कोन आ काहा को होछि ऑब्जेक्ट पिला देखो ही वाज पनिश्ड तेनु एटा ऑब्जेक्ट सेंस ताकू पनिशमेंट दिया गला तेनु पिला एटा होची पैसिव आमे जानिबा दरकार whether this sentence is in active or in passive now this is a passive the sentence is in passive because was पर पिला v3 लागि छै तेनु सेंटेंस ता पैसिव रे अछि। अच्छा पिला देखो एटा तमे देखो एटा होची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट को आंसर करूची मन रखितो पिला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट in passive is called a retained object direct object in passive is called retained object okay fine next पिला माने देखो सब्जेक्ट मेड हैला वर्ब मी हैला ऑब्जेक्ट विषय रे पिला कहूची सो ओसी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही मेड मी व्हाट फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट हे परिबो मु कहि छी ना पिला जोटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट
that is called factitive object. So it is either object complement or factitive object. एट पिला टिके टाइम अछि एवं बोर्ड पे स्पेस भी अछि लिखि दउछि पिला लिखि दबो dilly dally waste time moon about waste time bark at the moon waste time bark of the wrong tree pila accuse wrong person once in a blue moon occasionally. So it is object complement. Next question की पिला जीवा लिखि दियो देखो पिला क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू भलो क्वेश्चन जो होची पिला एटा पीडीएफ रे अछि एवं क्लियरली विजिबल क्वेश्चन उडा देखो पिला मी मोते ऑब्जेक्ट जोटा कहंती इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रो अन्य ना होची पिला कण ना डेटिव सम फ्लावर्स व्हाट को आंसर कला सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रो अन्य नाम कौन पिला ना एक्यूजेटिव टिके लक्ष्य कर पिला से कहि जे मी तळे अंडरलाइन करिछि डेटिव हबो एठी डेटिव अछि एगोटा हबो अच्छा तुम बहुतियो सर इंटरेस्ट कोन ना देखियो पिला सुनो टिके ही गेव मी ए पेन से मते कलम टिए देला मु ताको मागी नथिली मोर इंटरेस्ट थिला कि नहीं शो करूनी बट गिव मी ए पेन मु ताको मागुची so it shows interest that is why it is called dative of interest okay accusative I told you right now this is direct object accusative ये दीटा को पिला सेम आ nominative absolute काली जे मोर क्लास करिथिबो पिला मैराथन तादरे मु पार्टिसिपल dangling participle perfect participle present participle ता ऊपर आईडिया देइथिले आ कहिथिले nominative absolute कोन सेटा भी आईडिया देथिले तो each and every question you have to watch okay fine देखो पिला तो एटा होची डेटिव ऑफ इंटरेस्ट okay fine dative of interest because my interest is shown here whenever it is used in imperative sentence same dative is called dative of interest but if it is used in assertive or declarative sentence then that is only dative not interest okay fine तापर पिला देखो आमे वर्तमान मु आउ किछ लिखि देउछ पिला देखो परीक्षा रे आसीबो पिला देखो फर्स्ट वन लिखो akin to सब बेले हिंदी रे पिला ये फ्रेजल वर्ब ता आसे similar to पिला alien to strange alive to ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आसीबो पिला परीक्षा रे aware of wise to aware of alive with full of a team with a pregnant with then replete with
then fraught with, then freight with, then you can say infested with, bristle with. ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି full of ମୁଁ କହିପାରିବ team with, pregnant with, replete with, fraught with, freight with, infested with, bristle with. ସବୁ ଯାକ ପିଲା full of. Okay, fine. Now we will move to next question. Here, as far as the article question is concerned, you have to use either a or an or the or no article is there. General concept, sadharanatah pila, we don't use any article before parts of meals. No article. Before parts of meals. Unless it is particularized. So you see, how can it be particularized when we use article and when we don't use article? Dinner is taken at night. Not a particular dinner has been mentioned here, so no article. But the dinner drum up means prepared last night was really excellent. Here, my dear, you have to use the, because here it has been particularized. Particularly gotokali jo dinner prepare heithila, drum up mane prepare kariba. So ethi ki pila dekho, ethi I have been invited to the dinner particularly arranged by my in-laws. So here you have to use, as it has been particularized, so you have to use definite article the. But in general, we don't use any article before parts of the meals. Okay, next one. Pila. Jai Jagannath. Mumbai is dash Tokyo of India. Pila, Tokyo, it's the capital of Japan and generally it is a proper noun. And we don't use any article before proper noun. No article. No article before proper noun. Article base nahi. But the is used before a proper noun for the sake of emphasis. ठीक है, लक्ष्य करो पिला, इट टोकियो माने टोकियो नुह, it's not the capital of Japan, but it has been compared for the sake of emphasis. Mumbai, Tokyo is the most populous city all over the world, and Mumbai is the most populous city in India. So as far as population is concerned, Mumbai को पिला टोकियो सहित compare करा जाइछि. It stress emphasis so the एठी लागिबो. जेमति पिला हम कहिबा शेक्सपियर कालिदास is the Shakespeare of India. I'm going to Nelson Mandela is the Gandhi of India. Here, Gandhi means it is not a proper noun. Rather, the quality of Gandhi is reflected here
and quality of Shakespeare is reflected here in Kalidas. So here Shakespeare is not the name of a person as far as the question is concerned. That is why we can use the before them when for the sake of emphasis. Okay, fine. Next one, Pila. The plane crashed while leaving the ground. This is a very popular question you find in your everyday exam. Take over means assume control of. Take in means accommodate. I cannot take you in for more than 2 days. Take on means take the responsibility. And another one is combat by oppose. Oppose जोड़ा कौन cross. And take off means leave the ground. First one. Second one bila gotela leave the ground. Another one run away. Another one flourish. But जोड़ा कौन become popular. Another one remove dress or shoes. So my dear, here leaving the ground, this one leave the ground, so taking off. I think it is very clear. Okay. The idea took off, became popular. At the outbreak of corona, everyone took off in jitters, nervousness. Always take your shoes off before entering a temple. Remove your shoes. Take off your shoes before entering a temple. So this one is taking off. Next question ki pila jiba. Knock one's socks off. पिला माने it is an idiom और meaning बाहर करिया को पड़िबो पिला एटा होची बेसी समय नेबिनी आमाज attract और looker दीटा कर माने होची attract looker माने actually money तेनु lucrate कहती attract को कहती कारण टंका टा सब attract करे पिला rate माने scold पिला देखो take issue जेहेतु यार क्वेश्चन में दे दूची पिला disagree take a hike पिला go away take a rain check politely refuse to accept take to task punish give a sleep escape show a clean pair of shoes escape do the bunk escape go on a lamb escape show answer is C image then we will move to next question
Next one, पिला देखा, put the pedal to metal. Here also it is an idiom. Put the pedal to metal. देखा पिला, drive fast, not walk fast. Tip toe हला पिला, walk quietly. Okay, tip toe, drive fast. So you see, again I am telling, give it someone a wide berth. Will avoid, fight shy of, avoid, give it a shot or whirl. Will try, then give someone a talking to, criticize, then give someone an earful, scold, slap someone's wrist. Scold. Scold mana gadi kariba. So this is C. Then we will move to next. Again you see. One who lends money at high interest, high rate of interest, is called usurer. Stoic ହେଉଛି indifferent to pain or pleasure. Vintner, this was vintner, one who deals in making and selling wine. Mercer, one who deals in textiles or fine fabrics, is called mercer. So answer is usurer. Okay, fine. Next one we will move. Then the passengers dash the bus were shouting, my dear, just have a look. We generally use by bus or by train or by ship or by plane. But on the bus or a bus, on the train, on the ship, on the plane. So here on the bus article has been used before public vehicle, so we use the. Okay, next one we will move to next question.
inability to read because of brain injury. That is Alexia, encrasia nahi, eta encrasia, aphasia. Study of lights, that is called Alexia. Amnesia hochi pila loss of memory, loss of speech, a normal or good state of health, encrasia. Single word guna pura pila then B have answer. Loss of speech, that is aphasia. Loss of memory, that is amnesia. A normal or good state of health, that is encrasia. Then next one. My father became the mayor of Bhubaneswar. Pila dekha, a mayor of Bhubaneswar ta kon? Ta purpuru dekhiba pila. If it can replace be verb, it is called a linking verb. Mu er puruna YouTube class re pila a unique digital academy ro YouTube session re linking verb, action verb bisare vividly analyze kari taku bhalo bhabe dekhi pariyo pila. Linking verb ଆଉ linking verb pare jo gota ase, that is called subject complement. So it is complement subject, this will be the answer B. Not adverbial, not object, none. So the mayor of Bhubaneswar is subject complement here. Next one, pila. The jeans cost rupees 5,000. Anything that denotes amount, distance, time, and ताकू कहिबा पिला adverbial object और place पूछिए पूछाए ये चारिटा मन लिखता है पिला. So here it amount बा money जोड़ा गांधी, so it is adverbial object. पूरा clear पूछी दीजिए पिला. देखिए पिला, all the intelligent students सबु बेले पिला तमरा डिटरमिनर रे प्रॉब्लम होची. एटा होची पिला नाउन, एटा पिला एडजेक्टिव. काहे कि को एडजेक्टिव कहिबा ना मोर होई परिबो मोस्ट इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होई परिबो. एटा भी गोटे एडजेक्टिव. जनरली हम डेमोन्स्ट्रेटिव डेफिनाइट एडजेक्टिव कहू, किंतु एटा प्योरली एडजेक्टिव नो, कारण एडजेक्टिव रो तीनटा डिग्री होई परिबो. कोन पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. आर हेई परिबोनी, आर हेई परिबो एडजेक्टिव, आर हेई परिबोनी. सो डिटरमिनर ये पिला डिटरमिनर पूर्वरु बसिची, सो इट इज कॉल्ड प्री डिटरमिनर. तेणु जहार पिला कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हेई परिबो, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ओडा हेई न परिबो, दैट इज प्री डिटरमिनर. पिला आज पे एतिकी पुणी खाली आउ किछि क्वेश्चन आनी करी आसीबा एवरीडे एट 5 PM पिला माने क्लास पढुची, तमे देखि देई परिबो. ओके फाइन, थैंक यू. चलो